चलो, आई होप वी हैव बीन कंप्लीटेड विद द फेज रिलेशंस। बेटा याद है सभी को? फेज डिफरेंस के फॉर्मूले बताओ एक बार जल्दी से। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू योर 2 पाई बाई योर कैपिटल टी इंटू योर डेल्टा टी। दिस रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस है कि नहीं? इसको ऐसे ले सकता हूं मैं, डेल्टा फाई इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। याद है? उसी तरह से फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट द सेम टाइम, delta phi is equals to 2 pi by lambda into your delta x। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन। सो 2 pi by lambda कितना होता है बेटा? डेल्टा phi is equals to your k into your delta x। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूलेस ऑलरेडी अपन कर चुके हैं बेसिकली। सो डेल्टा phi is equals to your omega into delta t and delta phi is equals to your k into your delta t। ठीक है ना? इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, लेट मी सी। मान के चलो मेरे पास एक ट्रैवलिंग वेव है, मान के चलो y1 इज इक्वल्स टू इन ए ट्रैवलिंग वेव y इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू साइन पाई, यहाँ पर हो गया x माइनस 330 इंटू टी प्लस 2/3। मुझे चाहिए द फेज डिफरेंस, the phase difference between x1 is equals to 3 meters and x2 is equals to 3.5 meters के पास। चलो कोई करके बताइए। फेज डिफरेंस बिटवीन पाथ डिफरेंस है एंड फेज डिफरेंस है, isn't it? तो इक्वेशन क्या है बेटा? y is equals to 0.1 into your sin पाई को अंदर ले लो बेटा, this will become for me pi into x minus 300 pi into your t प्लस ये बन जाएगा 2 pi by your 3, isn't it? तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर इट विथ y is equals to your a into your sin kx minus omega into t plus of your phi। अगर मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मालूम है मेरे पास, फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू योर 2 पाई बाई योर लैम्डा इनटू योर डेल्टा एक्स, इजंट इट? तो k की वैल्यू कितनी है बेटा? k की वैल्यू लिख रहा है बेसिकली 2 पाई बाई लैम्डा पूरा क्या होता है? k वैल्यू होता है। k की वैल्यू कितनी है? पाई वैल्यू है, पाई के बराबर है, isn't it? This one is also written as delta phi is equals to k into your delta x, है कि नहीं? तो k की वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? कंपेयरिंग विद दिस वन, k की वैल्यू हो गई पाई इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1, तो ये हो गया मेरे पास पाई। x2 की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में? x2 की वैल्यू दे रखा है 3.5, 3.5 माइनस ये हो गया 3, ये हो गया मेरे पास पाई इंटू योर 0.5, यानी ये हो गया पाई बाई 2 आ गया। सो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 2। वेरी गुड। चलो और एक क्वेश्चन देख लो बेटा। A wave of frequency 400 hertz has a wave velocity of 300 meter per second। ठीक है, the phase difference between two displacements at a certain point at times t is equals to 10 to the power of minus 3 seconds apart is dash। इसके ऑप्शंस दे रहा हूं, देखो बेटा 144 डिग्री, 72 डिग्री, 102 डिग्री और 180 डिग्री। चलो करके बताइए। वेव ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में?
फ्रीक्वेंसी दे रखा है f इज इक्वल्स टू 400 हर्ट्ज. ओके, वेव वेलोसिटी यानी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड. फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ टाइम्स 10 to the power of minus 3 seconds apart will be equal to how much? Okay, phase difference लिख लीजिए. Delta phi is equals to कितना होता है 2 pi by capital T into your delta T. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? मैं ओमेगा into delta T लिख सकता हूँ. So that is equals to 2 pi into your frequency or f into your delta T. ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बेटा? तो delta phi will be equal to your 2 into pi into frequency is 400 into time is 10 to the power of minus 3. ठीक है ना? तो अभी कितना बन जाएगा बताओ जल्दी से. डेल्टा फी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बिकम फॉर मी 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1. तो ये बन गया मेरे पास 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है ये, सॉरी 10 टू द पावर ऑफ -3, 10 टू द पावर ऑफ -3. तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -1 है कि नहीं बेटा? वेरी गुड. तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना बेटा? सो ये बन गया मेरे पास 2 पाई. सो ये बन जाएगा मेरे पास 2 पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 पावर -1 बोलते हो जाएगा 10. 2 1 जा 2 5 जा, यानी ये बन जाएगा 4/5 टाइम्स ऑफ योर पाई. पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री. सो 4/5 पाई वैल्यू इज 180 डिग्रीज. तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 इंटू यूवर 5 6 यानी ये हो जाएगा 5 3 15 5 6. तो ये बन जाएगा 4 इंटू 36 दैट इज 144 डिग्री. सर वेव वेलोसिटी v ना बेटा, वेव वेलोसिटी ओमेगा बेटा. हाँ सॉरी, वेव वेलोसिटी इज v, सॉरी. चलो क्लियर है सभी को? Raise your hand beta, I can unmute you. And how omega we can substitute? हाँ बोलो बेटा. Sir, wave velocity is v na. Then how we can substitute omega? हेलो तहसीन बोलो बेटा. Sir, हाँ बोलो. sir, wave velocity v है ना sir? हाँ वेव वेलोसिटी मैं गलती से लिख दिया बेटा उन्हें. v है ये, v इज इक्वल्स टू योर 300 मीटर. हाँ. तो 2 पाई बाई टी इज तो इक्वल अभी होता है ओमेगा. ओमेगा कैसा सब्स्टिट्यूट कर सकते ओमेगा हैं? की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 400. हाँ. पाई इंटू एफ इंटू डेल्टा टी लिखा. हाँ. तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 400 इंटू 10 पावर -3. फिर ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है उसका कुछ रोल नहीं है सर? इसका कुछ भी यूज नहीं है. ओके ओके सर, ठीक है ना? चलो ठीक है सर. नेक्स्ट वन बेटा. साउंड वेव्स का देख लीजिए बेटा एक बार. Already told you sound waves are nothing but what in nature beta? They are longitudinal in wave. They are longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. Agar frequency of longitudinal waves is, if frequency is lesser than 20 hertz, they are called as of your infrasonic. जो snakes और elephants वगैरह सुनते हैं ना उसको. और frequency if it is 20 hertz से लेके 20,000 हर्ट्ज. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल वेव्स.
इसको बोलते हैं अपन ऑडिएबल वेव्स। अगर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, इसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी लेसर देन 20 है तो इंफ्रासोनिक वेव्स, ये 20 से लेके 20,000 तक होते हैं तो ऑडिबल, अगर ग्रेटर देन 20,000 होते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स पार्टिकुलेशन। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट वन। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को क्या याद रखना है, देखो साउंड वेव जो होते हैं ना, दिस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेट फ्रैक्शंस बेटा, यानी साउंड वेव की इक्वेशन में भी इन द प्रेशर और डेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। साउंड वेव्स travels due to pressure and density variations। ओके, साउंड वेव जो है ना डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन के डेंसिटी वेरिएशन में चलते हैं। अगर मैं कंप्रेशन के बारे में बात करूं, एट द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन प्रेशर जो है ना मैक्सिमम होता है, प्रेशर जो है ना मैक्सिमम होता है। अगर प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो डेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। उसी तरह से अगर रेट फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, जहां पर पार्टिकल के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके अंदर प्रेशर जो है ना मिनिमम हो जाएगा, प्रेशर जो है ना मिनिमम होगा और डेंसिटी भी मिनिमम होगी, डेंसिटी भी मिनिमम होगी, ठीक है ना। इतना याद रख लो, एट कंप्रेशंस प्रेशर इज मैक्सिमम, डेंसिटी इज मैक्सिमम, एंड एट रेट फ्रैक्शंस प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ ऑफ देम आर मिनिमम, बोथ ऑफ देम आर मिनिमम। तो इसका मैं इक्वेशन लिखूं, equation of sound wave, equation of sound wave, first one, displacement wave equation, सेम जो वेव इक्वेशन होती है उसी तरह से। सो डिस्प्लेसमेंट को अपन लिखते हैं, बेसिकली कंडीशन डिपेंड करता है कैसा लिखते हैं आप लोग। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज y और समटाइम्स इट कैन आल्सो बी रिटन एज ऑफ योर s, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वन एंड द सेम होता है बेसिकली। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू योर एम्पलीट्यूड a into your sin into k into your x minus omega into t, ठीक है। Displacement wave equation is this much. Is it clear for everyone? हाँ, sound waves are 3D बेटा, based on direction of energy and also longitudinal waves। मैंने already आप लोग को लिखवाया था बेसिकली, ठीक है ना। So S is equals to your A into sin K into your X minus of your omega into T। अगर प्रेशर वेरिएशन में लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, डेल्टा P will be equal to next one, pressure wave equation, pressure wave equation, delta P is equals to your minus of your delta P naught into your cos kx minus omega into t। अखिल बोलो बेटा। सर कल से क्या टाइमिंग पे होती है आपकी क्लास? कल नहीं बेटा, मंडे से, मंडे से होगी ना बेटा। हाँ मंडे से मॉर्निंग होगी क्लास एज यूजुअली, 7 to 8, 8 to 9, ठीक है। चलो, तो प्रेशर वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ योर डेल्टा पी नॉट इंटू कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी।
अगर ये माइनस ऑफ कॉस को निकाल दूं तो आई कैन राइट दिस वन एज डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट इंटू योर साइन ऑफ योर के एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस ऑफ योर पाई बाई टू, माइनस ऑफ योर पाई बाई टू, ऐसा भी लिख सकता हूं। कॉस को कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा साइन में, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, cos theta is equals to your sin of your theta plus of your 90 degrees। तो माइनस cos theta क्या बन जाएगा बेटा, माइनस cos theta is equals to your sin of your theta minus of your 90 degrees। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सो दिस को मैं 2 लिख रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट वेव को मैं लिख रहा हूं 1। लिख रहा हूँ 1, इसको 1 2। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव इज हाउ मच बेटा, 90 डिग्रीज, पाई बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये जो डेल्टा पी नॉट है ना, दैट इज नोन एज ऑफ योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी नॉट इज इक्वल्स टू, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल्स टू योर bulk modulus B into your K into your A। Okay, B is known as what for me, bulk modulus। B is nothing but your bulk modulus। bulk modulus का फॉर्मूला याद है बेटा, that is change in pressure divided by minus in change in volume by original volume। elasticity में पढ़े थे हम लोग। K is nothing but what बेटा, propagational constant। तो K की वैल्यू होती है कितना, 2 pi by lambda। और ये एज यूजुअली एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विल बी योर एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल्स टू बी के इनटू योर ए। क्लियर है। तो अपने पास क्या क्या आ गए बेटा, डिस्प्लेसमेंट की वेव आ गई, वेव इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन आ गया मेरे पास, आ गया डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, उसके बाद आ गया प्रेशर वेव इक्वेशन, पहले आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, उसके बाद आ गया प्रेशर वेव इक्वेशन, उसके बाद देखो थर्ड वन लिख रहा हूं, डेंसिटी वेव इक्वेशन। डेंसिटी वेव इक्वेशन, ठीक है ना। डेंसिटी वेव इक्वेशन लिखने का तरीका देखो बेटा, सो डेंसिटी वैरीज जस्ट लाइक ए प्रेशर बेटा, जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता है वैसे वैसे डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पर डेंसिटी लिख रहा हूँ, डेल्टा रो इज इक्वल्स टू योर डेल्टा रो नॉट into your sine of your kx minus of omega t minus of your pi by 2, सेम जैसे प्रेशर होता है, exactly similar बेटा, okay, exactly similar to your pressure। So I can say that density wave is similar to pressure wave, ठीक है। तो देख लो जल्दी से, साउंड वेव्स में longitudinal waves are responsible for that one beta, sound waves are nothing but what for me, longitudinal waves। if the frequency is less than 20 hertz they are known as of your what, infrasonics। if exactly 20 hertz say 20,000 hertz audible, greater than 20,000 they are known as of your ultrasonics। ये हो गया audible और ये हो गया ultrasonic। साउंड वेव ट्रैवल्स ड्यू टू व्हाट बेटा, प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन। कंप्रेशन के पास प्रेशर एंड डेंसिटी मैक्सिमम होती है, रिफ्रैक्शन के पास प्रेशर एंड डेंसिटी मिनिमम होती है।
इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है S इज इक्वल टू A इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। प्रेशर वेरिएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। और डेल्टा पी नॉट इज नोन एज ऑफ योर मैक्सिमम प्रेशर, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, बी के इनटू योर ए, where A is amplitude, B is bulk modulus, and K is your propagational constant. Density wave equation is exactly equal to your pressure variation. Clear है? चलो next one. Speed of sound in longitudinal waves. In your longitudinal waves. Transverse wave में तो मैंने लिखवाया था आप लोग को V is equals to under root of your T by mu. Longitudinal waves में जो होता है ना basically, that is basically right now for me what? किसी को याद है? Longitudinal waves के अंदर velocity will be equal to how much बेटा? V is equals to your under root of your E divided by rho. E is known as of your coefficient of elasticity. Coefficient of your elasticity. Clear है? Number 2. In gases or liquids, V is equals to कैसे लिख सकता हूँ बेटा? In terms of your bulk modulus divided by rho. Okay. In solids कैसे लिखेंगे बेटा? In solids, V is equals to under root of your Young's modulus divided by your rho. So Y is known as of your Young's modulus. B is known as of your bulk modulus. ठीक है ना? Bulk modulus का फॉर्मूला भी ऑलरेडी आपको पता है basically, so I'm not writing it again. So in gases, V is equals to under root of B by rho. In solids, V is equals to under root of Y, and generally we write V is equals to under root of E by your rho. E is known as of your coefficient of your elasticity. Clear है? Newton's formula. Newton's formula for the velocity of sound. याद है किसी को? V is equals to your under root of your bulk modulus divided by rho. Isothermal bulk modulus कितने को बराबर किसका होता है बेटा? Is equals to your pressure. ये हम लोग elasticity में ऑलरेडी कर चुके हैं. Isothermal bulk modulus is equals to your pressure. तो V हो गया मेरे पास under root of your P divided by rho. यानी न्यूटन साहब ने बोला था कि velocity of the sound in the gases which is an isothermal in nature will be depending on the pressure. So V is equals to under root of your P by rho. Clear है? Okay. And experimentally it was proved to be wrong. Experimentally it was wrong. Okay. Then उसके बाद आए अपने correction करते हुए Laplace साहब ने, उन्होंने बोला, so now we are talking about your Laplace correction. इन्होंने मीडियम को क्या समझा? आइसोथर्मल नहीं समझा, and he has been assumed the medium to be an adiabatic. He assumed medium to be adiabatic in nature. Adiabatic in nature. Adiabatic in nature रहने की वजह से bulk modulus of your adiabatic gases will be equal to how much बेटा? Gamma times of your pressure. ठीक है ना? तो velocity of sound बन गई V is equals to under root of your simply gamma times of your pressure divided by rho. This is your Newton's Laplace correction formula जो actually अपन use करते हैं for doing the numericals. Newton's Laplace correction formula is V is equals to under root of your gamma P by your rho. गामा वगैरह सब निकालने का आपको लोगों को तरीका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ. I hope everyone remembered it. Gamma is equals to your Cp by Cv. याद है? And gamma is also equal to, अगर number of degrees of freedom दे दिया 1 plus 2 by your f. याद है बेटा? ओके इतना तो बेसिक आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली आप लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में ही पढ़ा है, इसमें मिक्सचर वगैरह निकालने का तरीका.
सो एक बार से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास. Newton's formula for the velocity of sound is V is equals to your under root of your P by rho, which was experimentally was proved to be wrong क्योंकि velocity of sound इसमें से आ रही थी approximately जब calculate करें तो 280 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड लैपलेस करेक्शंस में जब वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाले तो v की वैल्यू आ गई, v is equals to 332 मीटर पर सेकेंड, which was experimentally correct. और इसकी वैल्यू आ रही थी v is equals to your some around 280 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. So Newton's formula is V is equals to under root of P by rho, and Laplace correction formula is V is equals to under root of your gamma P divided by your rho. Clear for everyone? Is that clear? Chalo. Here we go. From ideal gas equation, PV is equals to N into R into T. So I can write here P is equals to N is equals to mass by molecular weight into volume into R into T. Mass by volume क्या देगा बेटा? Mass by volume will give me density. So I can write this one as P is equals to rho divided by capital M R into your T. तो रो बाहर निकालो तो कितना बन जाएगा बेटा? पी एम इज इक्वल्स टू रो इंटू आर टी. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम डिवाइडेड बाई आर इंटू टी. याद है? तो इसको मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा इंटू पी बाई रो. सो p बाई रो कैसे लिख सकता हूँ बेटा? सो p बाई रो अगर मैं इसमें से लिखूँ, सो इट इज p डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम. So V is equals to your under root of your, this will become for me gamma into R into T divided by molecular weight. तो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं फॉर्मूले को, V is equals to under root of your gamma into RT divided by capital M. R क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और वैल्यू होती है 8.314 जॉल पर मोल केल्विन. ओके. और टेम्परेचर होता है इन केल्विन, और m is your molecular weight in kg. Clear है? Is that clear? So I can say that from this one, v is directly proportional to root of your t beta, isn't it? That means v1 divided by v2 will be equal to under root of your t1 divided by t2. So V is directly proportional to your T. V is directly proportional to how much for me? T. And for every each degree of your Celsius rise in temperature, speed of the sound increases by how much? We need to calculate that one. So V is also directly proportional to your under root of your capital M, molecular weight. Yani V1 by your V2 is equals to under root of your M2 divided by your M1. ठीक है? Is it clear? And V is also directly proportional to your pressure. V1 by your V2 is equals to under root of your P1 divided by P2. And V is also inversely proportional to your density. V1 by V2 is equals to under root of your rho 2 divided by rho 1. Clear बेटा? देखो यहाँ से लिख रहा हूँ सिंपली, V is under root of gamma P by rho. तो इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ मैं V is directly proportional to P and inversely proportional to density. Or from this equation I can write velocity is directly proportional to absolute temperature and inversely proportional to your molecular weight of that one. So V is directly proportional to root T.
V is inversely proportional to molecular weight, V is directly proportional to pressure, and V is inversely proportional to your density. Clear? Relation between speed of sound in a gas and RMS speed of molecules. RMS speed of molecules. KTG में पढ़े थे अपन, याद है? Very important relation बेटा. Regularly पूछते रहता. Relation between your speed of the sound in gas. So speed of the sound is given by the formula under root of gamma into RT divided by capital M. And VRMS is equals to under root of your 3RT divided by capital M. So speed of the sound divided by speed of your RMS velocity is equals to कितना आएगा बेटा? दोनों को डिवाइड करो, अंडर रूट ऑफ योर गामा डिवाइडेड बाय 3, isn't it? That means I can say that VRMS is greater than velocity of your sound. Very important relation. Very simple applications. आ गया सभी को? Next slide. Speed of sound in a gaseous mixture. Speed of sound का फॉर्मूला क्या है बेटा? V is equals to under root of gamma into R into T divided by molecular weight, isn't it? अगर मैं V naught ले रहा हूँ, V naught is equals to speed at 0 degree centigrade, तो V naught will be directly proportional to 0 degree centigrade मतलब 273, ठीक है ना? And velocity at your T degree centigrade, that means speed at your some T degree centigrade लिया, then velocity or speed at T degree centigrade will be proportional to under root of this one is T plus 273, isn't it? 0 degree centigrade के पास 273, some T degree centigrade के पास T plus 273 लिखोगे, isn't it? So that means speed at T degree centigrade divided by 0 degree centigrade is under root of your T plus 273 divided by 273. तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? T plus 273 divided by 273 to the power of 1 by 2, है कि नहीं? So I can write this one like this. So velocity or speed at T degree centigrade is equals to V naught into ये बन जाएगा 1 plus this will become for me T by 273 to the power of 1 by 2. Binomial expansion अपने एक फॉर्मूला मालूम है, 1 plus x to the power of n is equals to 1 plus n into your x, isn't it? If x is very small, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं. Vt is equals to your V naught into 1 plus ये बन जाएगा 1 by 2 into T divided by 273. तो speed at T degree centigrade is equals to 0 degree centigrade 1 plus T divided by 2 into 273 will become for me 576. ठीक है?
तो इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, Vt will be equal to V naught plus this will become for me 0.61 times of your T. स्टैंडर्ड फॉर्म से बेटा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, स्पीड ऑफ द साउंड इन गैसियस मिक्सचर, अपने पास बेसिक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा इनटू आर टी बाई टी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट v naught is your speed at your 0 degree centigrade, so I can say that v naught is proportional to your under root of 273. The same way Vt is equals to speed at your t degree centigrade, that means Vt is directly proportional to your t plus 273. इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो Vt by V naught is equals to under root of t plus 273 divided by 273. रूट निकाल के 1/2 में लिखा और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं मैं, तो Vt आई एम गेटिंग एज ऑफ योर V naught into 1 plus 1/2 into t by 273. इसको सिंप्लीफाई कर लो, वी आर गेटिंग Vt is equals to V naught into 1 plus t by 270 1 by 576. इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग Vt is equals to your V naught plus of your 0.61 t. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ पर 1 degree centigrade rise speed rises by 0.61 meter per second. इसका मतलब ये हुआ V naught plus 0.61 t, यानी per every 1 degree centigrade rise speed will rising by your how much 0.61 meter per second. क्लियर बेटा? हाँ, टू इंटू 276 कितना आ रहा है देखो बेटा, आई एम डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक, तो देख लो एक बार, चेक कर लो एक बार। दिस इज कमिंग 546, सॉरी, तो ये हो गया 546, ये भी हो गया 546। ठीक है, मैं रब करके लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 273 टू द पावर ऑफ 1/2, 273 टू द पावर ऑफ 1/2, तो ये बन गया मेरे को 546। ओके, तो उसका सिंप्लीफिकेशन देख लो, सो विल गेट रफ आइडिया रिलेटेड टू दैट। ओके, चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन देख लो बेटा, the temperature at which the speed of sound becomes double at 27 degrees centigrade is, so try करो, the temperature at which the speed of the sound is becoming for me double at 27 degrees centigrade,
speed at some T degree centigrade is 2 times the speed at your 27 degree centigrade, isn't it? And this is under root of gamma into R into T divided by your molecular weight is equals to 2 times of under root of gamma into your R into 273 plus of your 27 divided by capital L. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है, कैपिलम चले गया, गामा आर भी चले गया, और ये रूट भी चले जाएगा, रूट और रूट भी चले जाएगा, तो कितना आएगा देखो बेटा, ये 4 बन जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास t इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 4, दिस वन इज यूर 300, यानी t इज इक्वल्स टू 4 3 is 12, so it is 1200 Kelvin. So temperature is equals to 1200 Kelvin, isn't it? Or this will be 1200 minus 273, that will be equal to 927 degrees centigrade. Yeah, done beta. Chalo. Next question. The ratio of the speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is, first option is under root of 2 by 7, second option is under root of 1 by 7, third option is under root of your 3 by 5, fourth option is root 3 divided by 5. चलो try करो. The ratio of the speed of sound in nitrogen gas to that of your helium gas पूछ रहा, यानी ratio of the speed of your nitrogen to that of your helium is equals to, this will be equal to under root of your gamma of your nitrogen into R into at what temperature, 300 Kelvin, divided by molecular weight of your nitrogen into, ये उल्टा हो जाएगा, under root of molecular weight of helium divided by gamma of your helium into capital R into 300. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा, ये 300 AR चले गया, ठीक है ना, तो बचा मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर gamma of your nitrogen divided by gamma of your helium into molecular weight of your helium divided by molecular weight of your nitrogen, yani that will be equal to under root of your 7 by 5 divided by, this will be equal to how much for me beta, 5 by 3 molecular weight gamma value, isn't it? Monoatomic and diatomic. So this will be equal to 5 by 3 into molecular weight of helium will be equal to 4, on molecular weight of nitrogen will be equal to 28. Okay. So इसको simplify कर लीजिए, that is equals to under root of your, so this will be equal to 7 divided by your 5 into ये हो गया 4 into 3 divided by, ये भी हो जाएगा यहाँ पर 5 into 28. Isn't it? So just simplify it. This one is 5 by 3 बेटा, 5 by 3, 3 का एक और फिर यहाँ पर 1 मिनट, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लो इसको, that is equals to under root of your 7 into 4 into 3 divided by 5 into 5 into 28, बताइए ना, कितना आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है,
आया, इसमें जाएगा बेटा 7 1 जा 7 4 जा A4 चले गया, दिस वन इज √3 डिवाइडेड बाई, this will be equal to 5 5 is 25, √5 मतलब √25 is nothing but 5, √3/5, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, गामा निकालने का तरीका मालूम है ना बेटा सभी को? हाउ डू यू टेक द वैल्यू ऑफ गामा? गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f, isn't it? For diatomic gas, gamma of your nitrogen will be equal to 1 + 2 by, diatomic के लिए number of degrees of freedom is 5, that is the reason I'm getting 7/5. Gamma of your helium monoatomic gas 1 + 2/3, 2/3, तो ये बन गया मेरे को 5/3। ठीक है ना, ये ऑलरेडी अपन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में बहुत डिटेल में करे थे, तो आप एक बार रिवीजन कर लो उसके लिए। क्लियर है? क्लियर बेटा? डायटोमिक मोनोटोमिक के लिए याद रख लीजिए बेटा, द वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? Cp/your Cv, ठीक है ना, Cp is molar specific heat at constant pressure and Cv is molar specific heat at a constant volume, so gamma is equals to 5/3 for your monoatomic and gamma is equals to your 7/5 for diatomic gases and gamma is equals to 4/3 for triatomic gases। ठीक है बेटा, छोटा सा नोट लिख लीजिए। For mixture of gas at constant temperature, for mixture of gas at your constant temperature, V1 divided by V2 is equals to under root of your gamma 1 divided by gamma 2 into your M2 divided by M1 molecular weights, or else I can write V of your mixture divided by V is equals to under root of your gamma of your mixture divided by gamma into M divided by molecular weight of your mixture। molecular weight of your mixture कैसे लिखते हैं बेटा? N1 N1 M1 plus N2 M2 divided by N1 plus N2, ये अपन ऑलरेडी KDG में करे थे। गामा ऑफ मिक्सचर कैसे लिखते हैं याद है? गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1 into your, याद है बेटा? जल्दी से बोलो, N1 into your गामा ऑफ योर मिक्सचर, कोई बताइए? N1 into your Cp1
plus of your N2 into your Cp2 divided by, this will become for me how much beta, N1 into your Cv1 plus of your N2 into your Cv2. याद है? याद नहीं है तो याद रख लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें आप लोग को भूलना नहीं है। गामा ऑफ मिक्सचर केटीजी में रेगुलरली करें आप लोग बहुत सारा। हाँ, गामा ऑफ मिक्सचर इज सीपी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय सीवी ऑफ मिक्सचर भी लिख सकते हैं बेटा, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट इट आउट। Gamma of your mixture is equals to your Cp of your mixture divided by Cv of your mixture will लिख सकते। ठीक है, इक्वेशन करके बताओ बेटा जल्दी से। Find the ratio of speed of sound in neon to that in water vapor, to that in your water vapor at given temperature। चलो करके बताओ। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन नियॉन टू दैट ऑफ योर वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब क्या बेटा? H2O and it is a triatomic gas. Water vapor is what? Triatomic gas. And neon is nothing but what beta? Monoatomic gas. बस उसके हिसाब से कर लो, isn't it? So V is directly proportional to your gamma. So I can write here V1 by your V2 is equals to, molecular weights में भी दे रखा है ना बेटा, divided by, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसा, V is equals to under root of gamma into RT divided by capital M. So V1 by your V2 is equals to under root of your gamma 1 divided by gamma 2 into molecular weight M2 divided by your M1. So that is equals to under root of your gamma 1 यानी neon. Neon is a monatomic gas बेटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5/3। गामा 2 इज योर ट्राइटामिक गैस के लिए कितना होता है 4/3 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस वन कितना होता है बेटा M2 18 डिवाइडेड बाय नियॉन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 20। ठीक है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर 5/3 इंटू योर 3/4 आएगा ना, ये ऊपर चले जाएगा। स्ट्रक हो रहा है इंटू ये बन जाएगा मेरे पास 3/4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 20, 3 और 3 चले गया, so simplify it, we will be getting, see how much I'm getting this one, 5 1s are 5 4s are, so 18 कितना आ रहा है देखो बेटा, exactly, so this will be your 3 divided by 2 root। clear? एक बार जल्दी से देख लो बेटा, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है बेटा, V is equals to under root of P by rho। Experimentally it was proved to be wrong because velocity of the sound कितना आ रहा था 280 मीटर पर सेकेंड,
एंड न्यूटन साहब ने क्या समझा कि मीडियम वाज इज आइसोथर्मल इन नेचर, सो बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइसोथर्मल इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर प्रेशर पी। ये ऑलरेडी हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में भी कर चुके हैं। उसके बाद लैपलेस साहब ने आया और उन्होंने करेक्शन किया और उन्होंने बोला कि मीडियम जो है ना, इट इज नॉट एन एडियाबैटिक, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल, एंड ही assumed that medium is an adiabatic in nature, and he told that adiabatic bulk modulus of an adiabatic is equals to your gamma times of your pressure. So V is equals to under root of your gamma P by rho, और गामा की वैल्यू होती है Cp by Cv, और गामा की वैल्यू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका 1 + 2 by F. For an ideal gas, we know P by M can be written as PV is equals to nRT. From that one, I am writing P. This one rho is equals to PM by RT. So simplify करो तो V is equals to under root of gamma RT by capital M आ गया, तो directly proportional to temperature, inversely proportional to molecular weight, and V also directly proportional to pressure and inversely proportional to the density. So उसके बाद आ गया some relations, when we got the relations and basic problems here, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मिक्सचर के लिए भी लिख लेने का तरीका, ज़्यादा कुछ नहीं। लास्ट प्रॉब्लम का क्यों नहीं आ रहा बेटा? नियॉन इज अ मोनोडायमिक गैस एंड वाटर वेपर इज अ ट्राइडायमिक गैस। ट्राइडायमिक गैस गामा के लिए कितना होता है बेटा? ट्राइडायमिक के गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? गामा वैल्यू इज 4/3। मोनोडायमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। आ गया? क्या नहीं है? लास्ट प्रॉब्लम है, बोलो। √9 कहाँ है बेटा? ये 3 चले गया, ये 5 1 जा 5 4 से चले गया, तो दिस वन इज राइट नाउ √18। √18 कैसे लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई, ये कितना है? 4 4 जा 16, √16 आ गया। This will be equal to how much for me? Under root of your 3 into 6 divided by 16. हाँ, सो कैसे लिखा मैंने? रूट निकाल दिया, 3/2 √2। सही है ना? क्लियर? हाँ बेटा, सफीउल्लाह बोलो।
e power 0 is 1 beta exponential to the power of 0 is 1. ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा. Two sound waves having a phase difference of 60 degrees have path difference of how much? चलो करके बताओ. Two sound waves है which are having a phase difference of 60 degrees, यानी डेल्टा phi की वैल्यू कितनी है 60 degrees. तो इसका पाथ डिफरेंस कितना? डेल्टा x is equals to how much? चलो बताओ. डेल्टा phi is equals to k into डेल्टा x होता है बेटा. डेल्टा phi की वैल्यू कितनी दे रखा है 60 डिग्रीज यानी पाई बाई 3 है कि नहीं. दैट इज इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x. a पाई और a पाई चले गया तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ए लैम्डा ऊपर चले गया 3 2 6 यानी डेल्टा x इज इक्वल्स टू योर लैम्डा बाय 6.
ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। Traveling wave pulse is given by y is equals to 20 divided by 4 plus x plus 4t whole square. Okay, and y is in meters beta. Then number 1, the speed of the pulse is number 2, amplitude is so try करो बेटा। y is equals to how much for me? 20 divided by, this is 4 plus x plus of your 4t whole square. So wave speed is always calculated with the formula beta. V is equals to your coefficient of your t divided by coefficient of your x. So V is equals to, what is the coefficient of t? 4. What is the coefficient of x? 1. So that will be 4 meter per second. Okay. Now wave is traveling in which direction beta? So we are having positive here. So wave is traveling in negative x-axis. So obviously the amplitude of this one will be equal to how much beta? What will be the amplitude? Amplitude means what? Anyone? Amplitude means maximum displacement. Maximum displacement. And maximum, y will be maximum. Y will be maximum when x plus 4t square is minimum, that is 0. That means y max will be equal to 20 divided by 4. 4 ones are 4 5s are. So this will be equal to your 5 meters. That will be the amplitude. टुडे आई एम सेंडिंग वन असाइनमेंट बेटा, कंपलसरी एक बार आप लोग कल कर लीजिए स्टडी अवर्स में बैठ के कभी भी। ज्यादा नहीं भेज रहा, बस 10 से 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ। सो मॉडल्स कंपलसरी एक बार आप खत्म कर लीजिए।
डन बेटा। मंडे ऑफलाइन ही रहेगी बेटा, ऑनलाइन नहीं रहेगी। आज हॉलीडे था बोल के मैं ले लिया, क्योंकि कल मेरा थोड़ा कार का प्रॉब्लम हो गया था, तो आई कुडंट एबल टू कम ऑन फ्राइडे, तो थोड़ा रुक गया था, उसलिए आई डिडंट टेक इट। चलो स्टार्ट हो गया था, बट आई गॉट सम टेक्निकल प्रॉब्लम विद माय कार, तो आई कुडंट एबल टू कम। तो वही क्लास कंपनसेट करने के लिए मैंने आज ऑनलाइन ले लिया। अदरवाइज मंडे तो एज यूजुअली अपने को ऑफलाइन क्लास ही रहेगी, ठीक है ना। मॉर्निंग 7 to 8 एक क्लास है और 8 to 9 एक क्लास है। 8 to 9 IC2 और एक क्लास कंबाइंड है, और IC1 की क्लास 7 o'clock से लेके 8 o'clock। टाइम टेबल तो वैसा डाले, ठीक है। टेक केयर बेटा, दे रेगुलर रहेंगे बेटा सभी को क्लास, एज यूजुअली जैसे चल रहे हैं ना वैसे ही चलते रहेंगे। ओके बाय।